Good morning, friends. Today we will discuss about the inflammation of cornea. So first of all, the inflammation of cornea is known as keratitis. Keratitis. As per the name, kera means cornea, titis means inflammation. Inflammation. So inflammation of cornea is called keratitis. It is characterized by keratitis is characterized by corneal edema, cellular infiltrate, and ciliary congestion. Ciliary congestion. Okay, so now keratitis is divided by the basis of first morphological, and second one is etiology or cause. Etiological. Okay, according to morphological, it is subdivided into ulcerative and non-ulcerative. Okay, ulcerative is subdivided on the basis of location, size, okay, or with hypopion, without hypopion, depend on the suggestion information, or depending on the purulent. Etiology is subdivided means cause. First, of course, infective keratitis. Infective keratitis by bacteria. Okay, fungal, bacteria, fungal, viral, protozoal, or chlamydial. In fact, allergic keratitis. Second is tropic, and third is tropic keratitis. Keratitis which is associated with skin, with skin, or associated with any other systematic callous vascular disease. Systematic callous vascular disease, or any traumatic conditions. Traumatic condition या फिर keratitis. Okay, so first, what is ulcer? Okay, what is ulcerative keratitis? So ulcerative keratitis is that means discontinuation of normal epithelial surface, okay, by surrounding the necrosis of cell, means death of cell. Basically, cornea is elliptical, anterior surface is elliptical, okay, but in ulcerative case it is discontinuation and the surrounding cell as necrosis, means death of the cell. So this condition is known as keratitis. तो एक बार रिटर्न लिख देते हैं. Corneal ulcer may be defined as discontinuation in normal epithelial surface, normal epithelial surface of cornea
associated with necrosis of surrounding cell, associated with necrosis of the surrounding corneal cell, necrosis of the corneal surrounding cells. ओके, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अल्सरेटिव केराटाइटिस के पैथोलॉजी. व्हाट इज द पैथोलॉजी बिहाइंड इट? फर्स्ट, इट मे बी लोकलाइज्ड, मीन्स अगर ये फ्रॉम कॉर्निया, फ्रॉम एपिथेलियल टू बुमांस, फ्रॉम एपिथेलियल टू स्ट्रोमा, इट इज हील्ड. ओके, बट आफ्टर stroma means descendant membrane, when the descendant membrane is also infected by ulcerative keratitis, so the term is perforated cornea, perforated. And last one is staphyloма, anterior staphyloma. So these three pathological condition we will discuss in detail, okay, one by one. So first one, pathology of localized corneal ulcer. So इसके 4 stages होते हैं. First is stage of progression infiltrate. Basically there is so many bacteria in the environment which is directly contact to the cornea, but the cornea is not always affected by any bacteria. So bacteria has some protective mechanism in tear, like in tear. First one is lysozyme, second is beta lysine and other protein. Okay, this type of immune system which protects the cornea from the outside environment, या फिर outside infective agents or bacteria, others. Okay, suppose if this agents are infect the cornea, so first one is it necroses the cornea. Suppose this is cornea, it is infect the superior part. So first work is necrosis, means death of cell, necrosis of the surrounding cell is occur. Okay, second thing is ये totally depend करेगा which type of strength and offending agent, means कितना offending agent और कितना उसका strength है कि cornea को infect करे. if अगर ये को बहुत ही मतलब कम अमाउंट में इन्फेक्ट कर रहा है तो लाइसोजाइम और बीटा लाइसिन इसको फाइट करके इसको निकाल देंगे. इफ इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग सो नहीं निकाल पाएंगे. तो डिपेंड upon the virulence of offending agent and the strength of defending mechanism. The strength of the defense mechanism. तो ये टोटली डिपेंड करेगा जो एजेंट है वो कितना स्ट्रेंथ में है. अगर वो कम अमाउंट में है तो वो फिर इन्फ्लेट करके चले जाएगा. फिर वो ज़्यादा अमाउंट में है तो वो नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएगा, स्टेज ऑफ एक्टिव अल्सरेशन. तो फर्स्ट नेक्रोसिस तो हो गया, सो लिख देते हैं एक्टिव अल्सरेशन रिजल्ट फ्रॉम नेक्रोसिस. तो इसके बाद क्या होगा, एंड देन स्लजिंग ऑफ द एपिथेलियम. फर्स्ट एपिथेलियम सरफेस पे था, देन इस कंडीशन में एपिथेलियम के सरफेस पे था, बट इस कंडीशन में बुमन्स मेम्ब्रेन पे भी आएगा. सुपीरियर सुपरफिशियल पार्ट ऑफ स्टोमा भी आल्सो इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन. ओके, so sledging of the epithelium, Bowman's membrane and also involved
and also involve superficial part of stoma. Okay, so superficial part of stoma is contain lamellae in arrangement and parallel. Okay, so swelling of lamellae, ठीक है. As we know, जो कॉर्निया होता है 2 कॉर्निया इज एवास्कुलर. फर्स्ट कॉर्निया इज एवास्कुलर, बट 2 जो सिलरी मतलब सिलरी जो बॉडी होती है उसके जो ब्लड वेसल्स के लूप से होते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं नरिशमेंट टू द कॉर्निया. तो इन दिस स्टेज so vascular congestion may be seen. vascular congestion. अब vascular congestion मीन्स ब्लड वेसल्स, यहाँ पे डायलेटेड ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिल सकते हैं इन कंडीशन ऑफ स्टेज अल्सरेटिव. ओके, इफ vascular congestion दिखेगा तो देन आयरिटिस जो आयरिस होगा वो इन्फ्लामेशन हो जाए. आयरिस इन्फ्लामेशन होगा तो फिर इट लीड टू हाइपोफियन. ओके, इट लीड टू हाइपोफियन. अब नेक्स्ट कंडीशन करते हैं स्टेज ऑफ रिग्रेशन. सपोज इफ इस जो इफेक्टिव एजेंट है सिर्फ सुपरफिशियल पार्ट ऑफ स्टोमा को इफेक्ट करके कराए, देन हमारा जो डिफेंडिंग मैकेनिज्म है वो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करेगा, देन उसको फाइट करेगा, ठीक है, और उसको वहां से खत्म कर देगा. तो रिग्रेशन स्टेज में होता है रिडब्लेशन इज इंड्यूस्ड बाय नॉर्मल होस्ट डिफेंड मैकेनिज्म. तो नॉर्मल होस्ट डिफेंड मैकेनिज्म क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? फर्स्ट ल्यूकोसाइट्स एंड सेकंड वन इज phagocytic cells. Phagocytic cells. अब then ulcer. This ulcer began to heal. The ulcer began to heal. Okay. Stage of cicatrization. अब जब प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है हीलिंग प्रोसेस है, हीलिंग इसमें कंटिन्यू है, हीलिंग कंटिन्यू टू प्रोसेस. बट जब कोई भी कंडीशन इन्फेक्ट करके जब हील होती है तो एक स्कार फॉर्म कर दिया. इट फॉर्म स्कार. सपोज ये बहुत ही सुपरफिशियल पे, मतलब एपिथेलियल के सुपरफिशियल पार्ट पे इन्वॉल्वमेंट था ओनली. सो वेरी सुपरफिशियल पार्ट पे इन्वॉल्व था, तो उसमें कोई भी स्कार नहीं फॉर्म होगा. तो नो स्कार इज फॉर्म्ड. बट इन बुमान्स मेम्ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है. Buma membrane is involved, then nebular scar is seen. Okay. Third is if stoma is infected less than 1/3, so it creates a scar, macular scar. And last is if it is greater than 1/3 infected, stoma is infected 1/3, greater than 1/3, so it creates leukomatous scar. So अभी हमने क्या पढ़ा? पैथोलॉजी ऑफ लोकलाइज्ड कॉर्नियल अल्सर. इफ इट इज हीलिंग, ओके, सपोज जो एक्टिव अल्सरेशन है इज नॉट डिफेक्टेड बाय द अवर agent leukocyte or phagocyte, so it affect up to descendant membrane, so the cornea is perforate. So second is pathology of perforate corneal ulcer. So descendant membrane is infected in this. Okay, so we write it perforation
of corneal ulcer, perforation of corneal ulcer occur when the ulcerative process deepness and reaches up to descendant membrane. As we know, जो descendant membrane is homogeneous layer. Okay, it is tough. The layer, this layer is tough, but when it is infected by the any yeast and bacteria, so it is bulges out as desmetocele. So what is desmetocele? If this is descendant membrane, so it is like elevated sometime. This is line. This condition is known as desmetocele. Suppose desmetocele is formed. Okay, then it is perforated. हाई रिस्क किसमें होता है? हाई रिस्क और परफोरेशन होता है एट द टाइम ऑफ desmetocele. The patient have sneezing, cough या stool एक्सेट्रा. उस टाइम पे ज़्यादा चांसेस होते हैं परफोरेटेड होने में. सपोज when the infected agent is infect the descendant membrane only at the superficial part of descendant, so it may be healed. So this it may be healed when perforation is small, very small, it is healed. So it form a ligamentous suppose the cornea is infected up to descendant membrane and it is perforated. So after perforation, anterior stroma is the last stage. So what happened after perforation? Perforation means hole of cornea. Okay, in perforation, obviously intraocular pressure of IOP, intraocular pressure is decreased because all the aqueous humor is flow outside. Okay, all the aqueous humor flow outside. और जो iris is move forward. So iris move forward. Okay, so we say total prolapse of iris occur. Okay, making iris inflamed. Okay, exudate block the pupil. It form false cornea. Okay, so when the IOP is decreased and iris is move forward, so this condition is known as anterior staphyloma. So we will discuss about the pathology of corneal ulcer. First
stage of progression, infiltrate, active ulceration, regression, cicatrization, and pathology of perforated corneal ulcer, and anterior staphylomas. So now we will discuss about the etiology, means cause. अभी हमने पढ़ा था ना कि इन बैक्टीरियल एजेंट्स, viral infector. So first one is bacterial corneal ulcer. In bacterial corneal, the ulcer which is formed by any bacteria, that is called bacterial corneal ulcer. Most commonly Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. The sign and symptom of the corneal ulcer is same. Like first symptom, pain, foreign body sensation, foreign body sensation. Second, watering. Third, photophobia. Blurring of vision is main. Blurring of vision. And last is redness. Okay. So all the symptoms are present in corneal ulcer. Okay. So second is hypopyon corneal ulcer. Hypopyon corneal ulcer. अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था हाइपोफियन कॉर्नियल अल्सर, मतलब फॉर्म कैसे होता है. बट ये मोस्ट कॉमनली जो बैक्टीरिया होता है न्यूमोकोकस बैक्टीरिया में जनरली फॉर्म होता है. तो आयरिटिस होगा. सो हाइपोफियन मतलब प्रेजेंट कहाँ पता है. सपोज ये कॉर्निया है या इस एंड इस इंफीरियर आइरिस. तो ये जो इंफीरियर पार्ट होता है एंटीरियर चैम्बर के इंफीरियर पार्ट में वाइटिस सेल होते हैं. वाइटिस सेल जो पसला के वाइटिश होता है उस फॉर्म में ये हाइपोफियन हमारा प्रेजेंट होता है. तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपोफियन कॉर्नियल अल्सर. थर्ड, मार्जिनल कॉर्नियल अल्सर. मार्जिनल corneal ulcer होता है the superficial ulcer situated near the limbus. So these superficial ulcer situated near the limbus. Generally it is seen in old patients. Fourth, myotic corneal ulcer. जो myotic corneal ulcer है उसे हम फंगल क्या है, फंगल अल्सर भी बोलते हैं. फंगल केराटाइटिस, फंगल अल्सर. तो इसमें क्या होता है, ये अभी रिसेंटली ईयर में डायग्नोज हुआ था. ठीक है. ये फंगल केराटाइटिस मतलब फंगल अल्सर बोलते हैं उसको. मायोटिक कॉर्नियल अल्सर भी बोलते हैं. फिफ्थ, वायरल कॉर्नियल अल्सर. जो वायरस से अल्सर कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हम वायरस कॉर्नियल अल्सर. ठीक है. अब आते हैं सिक्स
हाउ सिंपलेस्ट केराटाइटिस, ठीक है। हाउ सिंपल केराटाइटिस या फिर HSV बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने वायरस पढ़ा था, तो HSV हाउ सिंपल वायरस से जो कॉज होता है उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाउ सिंपल केराटाइटिस। ये कंजक्टिवाइटिस मतलब कंजक्टिवा इन्वॉल्व होता है इसमें, कभी कभी आइरिस भी इन्वॉल्व होती है, तो कंजक्टिवा इन्वॉल्व होता है उसको इस कंडीशन को बोलते हैं हम कैरेटो कंजक्टिवाइटिस, कैरेटो कंजक्टिवाइटिस। और आइरिस प्रेजेंट होती है तो इसको बोलते हैं आइरिटिस, ओके। तो जो हब सिंपल केराटाइटिस है वो वायरस है, तो इट मे बी ओनली एपिथेलियल इन्वॉल्वमेंट, और सेकेंड अप टू स्टोर्मल keratitis. If only epithelial is involved, so three type के हमें अल्सर में देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट इज punctate epithelial keratitis. Second is dendritic keratitis. Third is geographical keratitis. Punctate keratitis में क्या होता है, एक कॉर्निया स्पुट से जो अल्सर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं punctate keratitis. डेंड्राइटिक में जनरली जिगजैग लीनियर ब्रांचेस शेप में हमें दिखता है, जिगजैग में लाइक दिस टाइप ऑफ अल्सर देखने को मिलता है। ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल शेप दिस टाइप, ओके। स्टोमल केराटाइटिस में मिलता है हमें डिफ्यूज या डीप, डिसीफॉर्म बोलते हैं उसको, डिसीफॉर्म केराटाइटिस में जनरली हमको डिस्क के फॉर्म में ऐसे दिखाई देता है, जो कि स्टोर्मल में इनफेक्ट अप टू स्टोर्मल इनफेक्ट उसमें होता है। सेवंथ इज herpes zoster ophthalmicus. herpes zoster ophthalmicus जो इन्फेक्ट होता है जनरली फिफ्थ क्रेनियल नर्व इसमें इन्फेक्ट होती है। जो पेशेंट होता है इसके जो फेस होता है, जो फर्स्ट फेस इन्फेक्ट होता है, मतलब हाफ साइड ऑफ फेस उसका इन्फेक्ट होता है, जिसकी वजह से उसके जो कॉर्निया होता है उस पर वो वायरस आ जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं herpes zoster ophthalmicus. Eighth is keratitis associated with any skin disease, associated with skin disease. First is rosacea keratitis. रोजिया केराटाइटिस। अभी रोजे केराटाइटिस में क्या होता है, 10% ऑफ जो भी एनी इन्फेक्टेड स्किन में जो भी स्किन इन्फेक्टेड एजेंट होता है उसमें से 10% ऑफ केसेस में हमें केराटाइटिस मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। 10% ऑफ केसेस ऑफ एकिनोसिया, ओके। नाइन मोरन्स अल्सर। मोरन्स अल्सर में क्या होता है, जनरली ये बहुत ही सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है, सीवियर इन्फ्लामेशन, जो कि पेरिफेरल जो होता है हमारा कॉर्निया की जो पेरिफेरी होता है इस पे अल्सर फॉर्म होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिफेरल अल्सरेटिव
केराटाइटिस। ओके, ये सब हो गया हमारा अल्सरेटिव केराटाइटिस का। देन नॉन अल्सरेटिव केराटाइटिस, लास्ट इज नॉन अल्सरेटिव केराटाइटिस। जिस केराटाइटिस में अल्सर नहीं होता उस कंडीशन को बोलते हैं हम नॉन अल्सरेटिव केराटाइटिस। अब ये भी टू टाइप का होता है। फर्स्ट डिफ्यूज, सेकेंड इज सुपरफिशियल पंक्टेड केराटाइटिस। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसपीके। ठीक है, अभी डिफ्यूज में क्या होता है, एक सपोज कॉर्निया है, तो ये मतलब पॉइंट में डिफ्यूज होता है। ठीक है, ये केराटाइटिस। लेकिन एसपी केस में क्या होता है, जनरली कुछ जब हम कोबाल्ट ब्लू फिल्टर लगाते हैं, ठीक है, पहले फ्लोरसीन लगाने के बाद पेशेंट को कोबाल्ट ब्लू फिल्टर में हम एग्जामिन करते हैं, तो ये पॉइंट दिखाई देता है हमें येलोइश, मतलब ब्लूइश येलोइश। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एसपी केस के। लास्ट में हमारा इसमें नॉन अल्सरेटिव में आता है फोटो ऑप्थेल्मिया। फोटो ऑप्थेल्मिया नेम से ही पता चल रहा है, सनराइज अल्ट्रा वायलेट रे से जो होता है उसको बोलते हैं फोटो ऑप्थेल्मिया। तो इट रेफर टू occurrence of multiple epithelial erosions, okay, due to the effect of ultraviolet rays, especially from 3112 to 290 में। ओके, तो आज हमने पढ़ा इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, केराटाइटिस, अल्सरेटिव, नॉन अल्सरेटिव एंड इज कॉजेटिव एजेंट। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिस्ट्रोफीज ऑफ कॉर्निया। थैंक यू।